एक सप्ताह पहले जूनागढ़ के केशोद के आंबावाड़ी इलाके में एक बगीचे का नवीनीकरण करवाया गया है और उसे अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज करवाया गया है। हालांकि नगर पालिका की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अगर इस सुंदर गार्डन की देखभाल लोगों की ओर से नहीं की जाएगी तो फिर गार्डन की देखभाल करने के लिए नगर पालिका टेंडर बाहर निकालेगी और एक प्राइवेट पार्टी को इस गार्डन का देखभाल करने का कार्य सौंप दिया जाएगा। तब आपको बता दें कि लोगों के लिए अब ये बेहद ज़रूरी है कि केशोद में ये जो गार्डन है उसका ख्याल लोगों की ओर से रखा जाए और गार्डन में खड़ी करवाई गई किसी भी सुविधा को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। मेहुल गोंडलिया नगरपालिका प्रमुख केशोद रोज 8 दिवस पहला जे बगीचाનું ઓપનિંગ કર્યું એના માટે જાહેર જનતાને અમે અપીલ કરેલી હતી કે ભાઈ બગીચો આપણી મિલકત છે, એને આપણે જ જાળવણી રાખવાની ને આપણા જ બાળકો માટે છે। આજ રોજ અમે એની મુલાકાત લેતા એક પણ પ્રકારની જાળવણી જે સ્ટેચ્યુ એની ઉપર એના બાળકોને બધાને માથે બેસાડે છે અને ઝાડને એટલું નુકસાન પહોંચાડે છે। ત્યારે જાહેર આપણી નગર સભ્યોને એટલી વિનંતી છે કે ભાઈ કોઈ પ્રકારનું આમાં નુકસાની જાય તમારી જ નુકસાની છે, એટલે હજી પણ જાળવણી રાખે। જે આવનારા સમયમાં નગરપાલિકાને કોઈ નિર્ણય લેવો પડે આના માટે એના કરતાં પોતાની મિલકત સમજીને પોતાના બાળકો હસી ખુશીથી રમે, પોતે પણ આ બગીચાનો लाभ लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।